Good morning, students. Today we will study about perfect tenses, present, past and future. Perfect tenses show actions already completed or completely done in the past. These tenses are also called simple perfect tenses. Perfect tenses shows us the actions that are already completed or they are completely done in the past. And these sentences are also known as simple perfect tenses. Simple perfect tenses. These sentences are easy to identify as the verb phrase consists of has, have or had as helping verbs and the verb in the past participle form. So these sentences can easily be identified because the helping verb is has, have or had. We use has and have with present and had with past. And main verb is third form of the verb. Simple perfect tenses has three parts: present perfect, past perfect and future perfect. Now first we will study about present perfect tense. We use the present perfect tense to talk about an action that was completed in an unspecified or indefinite time in the past. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर एक्शन जो है पास्ट में कब ख़त्म हुआ उसका पता नहीं है. नाउ इसका स्ट्रक्चर क्या है? हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी यूज़ हैज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स and have with plural subjects, and we also use have with I and you plus past participle of the verb means third form of the verb. Now see the example. I have seen this movie earlier. Now I is singular but we use have with it. Seen is past participle. This movie earlier. Now uses of present perfect tenses. So on the uses of present perfect tense we can divide it into two parts: unfinished actions and finished actions. So first we will talk about unfinished actions. To talk about unfinished actions, they started in the past and continue in the present. अगर हम unfinished actions के बारे में बात करें तो ये past में ख़त्म हो गए, पास्ट में स्टार्ट हुए और प्रेजेंट में ये कंटिन्यू है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन आशीष फॉर 10 years नाउ. कपिल हैज़ बीन हेयर सिंस 2 PM. कि कपिल जो है यहाँ पर आया था और अभी भी 2 बजे तक वो यहीं है. फिनिश्ड एक्शंस. टू टॉक अबाउट अ लाइफ एक्सपीरियंस. लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं. We do not specify the action happened. It had happened just sometimes in the past. इस एक्शन कब हुआ ये स्पेसिफाई नहीं है, वो पास्ट में किसी समय में हुआ था. फॉर एग्जाम्पल, मुकेश हैज़ लिव्ड इन जापान. हैव यू रेड पैराडाइज लॉस्ट? नाउ टू टॉक अबाउट फिनिश्ड एक्शन विद अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट. The focus is on the result. हम उस एक्शन फिनिश्ड एक्शंस के बारे में बात करते हैं जिनका जो है रिजल्ट हम प्रेजेंट में देखते हैं. एंड इट फोकस ऑन द रिजल्ट ओनली. फॉर एग्जाम्पल, मदर हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द लंच. आई हैव लॉस्ट माई बैग. देन टू इंडिकेट दैट एक्शन हैज़ बीन completed बट द एग्जैक्ट टाइम इज अननोन. ये बताने के लिए कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, क्रिश एंड हिज फ्रेंड्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स. दे हैव नॉट सीन मी दिस मंथ. नाउ वी विल टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. We use the past perfect tense to talk about an action
that took place in the past before a specific point of time or another past action. पास्ट परफेक्ट टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं कि पास्ट में जो एक्शन हुआ है उसका जो है दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले जो है वो ख़त्म हो चुका है. और इसका स्ट्रक्चर क्या है? हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड वी यूज़ हैड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स and plural subjects also, and plus past participle form of the verb. Past perfect tense, examples of past perfect tense are I had seen this movie before. Now here had is helping verb and seen is past participle. I had seen this movie before. It was released in India. Then uses of past perfect tense to show a completed action before something else in the past. For example, when we arrived, the movie had already started. So in the above sentence, the movie started first and then later we arrived. Later means we arrived. Now, to explain or give a reason for something in the past. For example, they have prepared for the examination, so they did not study. It had rained heavily, that's why we did not go out. To state a condition. For example, if I had known you were ill, I would have brought medicines for you. Had I bought the book, I would have studied. Now, future perfect tense. We use the future perfect tense to talk about an action that will occur in the future before a certain point of time or another action in the future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जो एक्शन जो है हमारा फ्यूचर में स्टार्ट होगा, दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ सी द एग्जाम्पल. आई विल हैव सीन दिस मूवी बाय द टाइम इट इज रिलीज्ड इन इंडिया. Now uses of future perfect tense. To express an action which will have been completed before a given point of time in the future. For example, you will have finished your project by this time next month. I hope students you all have understood the concept. Now try to do the exercises in your book. I will send you the answer key. Thank you.